Are you able to see? Yes, ma'am. Okay. So I was talking about that. Yesterday I have taught you these two kind of pigments. Okay. One kind of pigment is what photosynthetic bacteria have pigment. Okay, pigment present, and chemosynthetic bacteria pigment is absent there. But yesterday I was in hurry and I wrote down that pigment is present in this one. So I was explaining that this should not be here. Sana, ये जो पिगमेंट है, ये जो पिगमेंट मैंने लिखा है नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दीज पिगमेंट आर प्रेजेंट बट इन फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ, नॉट ऑटोट्रॉफ्स में. सी, once again let me explain this nutrition. Okay, nutrition in bacteria is of two kinds. What first is what autotroph, second is what chemoautotroph. Autotroph वाले क्या करते हैं, they make use of light, and chemotroph वाले क्या करते हैं, they make use of chemical synthesis. Means they don't use light, they don't use light. Light में उसमें use नहीं होता है. फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स वाले अगर लाइट का यूज कर रहे हैं, सो पिगमेंट इज प्रेजेंट इन फोटो ऑटोट्रॉप्स, एंड पिगमेंट इज प्रेजेंट, दिस पिगमेंट आई हैव एक्सप्लेन्ड लेटर in this here. These pigments are of two kinds. One is bacteriopurpurin, other is bacterioviridin. So ये दोनों पिगमेंट क्या है, एक पर्पल कलर का, एक ग्रीन कलर का. और ग्रीन और पर्पल कलर के जो इसके एग्जांपल्स में आएंगे वो क्या आएंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. एंड दीज टू बैक्टीरिया आर ओनली एबल टू परफॉर्म फोटो ऑटोट्रॉपिक kind of nutrition. Okay, so here chemical synthesis में क्या था, I have told you about that there is no light present and no pigment is present. So जब no pigment is present तो यहाँ पे non purple sulfur bacteria and non green sulfur bacteria यहाँ पे नहीं present होंगे. They will only use what inorganic chemical compound and they will do oxidation of inorganic chemical compound. Oxidation करने के बाद energy will release, and जब एनर्जी रिलीज होगा तो वो एटीपी बनाएगा, एंड दैट एटीपी इज यूज्ड बाय दोज बैक्टीरिया फॉर देयर फीडिंग पर्पस. ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स के जितने बैक्टीरिया होंगे, दे विल यूज द इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड फॉर ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी से जो एटीपी बनेगा वो एटीपी वो लोग अपने फीडिंग के लिए यूज करते हैं. दे यूज दैट एटीपी फॉर देयर न्यूट्रिशन पर्पसेस, एंड हियर नो पिगमेंट्स एंड नो लाइट आर देयर. सो दिस पिगमेंट व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज प्रेजेंट इन व्हाट, फोटो organoheterotrophs. It is present where, photoorganoheterotrophs, which is in heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Okay, so this was one confusion that I was going to clear first in hand. Okay, now coming back to heterotrophic nutrition. Sana, are you able to understand what was the mistake yesterday? Sana, repeat कर दीजिए. Okay, so yesterday क्या हुआ था कि मैंने बताया एक फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है, एक कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है. तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है उसमें ही पिगमेंट प्रेजेंट है, कीमो ऑटोट्रॉप्स में कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है. ठीक, फोटो ऑटोट्रॉप्स में पिगमेंट है, कीमो ऑटोट्रॉप्स में पिगमेंट नहीं है. फोटो ऑटोट्रॉप्स वाले यूज करते हैं, दे मेक यूज ऑफ दीज पिगमेंट, एंड बाय यूजिंग दीज पिगमेंट they use inorganic form and convert inorganic form into organic form, or inorganic form like carbon dioxide and hydrogen sulfide are used, and they convert this inorganic form into organic form. तो ये लोग यूज करते हैं by using these kind of pigment. Which two pigments are there? Bacteriopurpurin and bacterioviridin. Only these two bacteria are present in photoautotrophs, and no pigment are present in chemoautotrophs. Chemoautotrophs में they make use of chemical method, means they use chemical synthesis. And chemical synthesis में वो लोग क्या करते हैं, they make use of inorganic compound, और inorganic compound का वो लोग oxidation कराते हैं. oxidation कराने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से जो एटीपी मिलता है, दैट एटीपी आर यूज्ड बाय देम फॉर फूड, फॉर देयर फीडिंग. लाइक देखो, इसका ये नाइट्रेट का नाइट्राइट में ऑक्सीडेशन कराया, फिर NO2 का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन कराया. तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद जो इन लोगों को एटीपी मिल रहा है, दैट एटीपी दे आर यूजिंग फॉर देयर फीडिंग पर्पस. ओके, नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so here heterotrophic bacteria. Now heterotrophic bacteria, as I've explained, those kind of bacteria which are dependent on other organisms for their food and feeding purpose. So heterotrophic bacteria. See, heterotrophic bacteria is also of two kinds. One is what? Photoorganoheterotrophs. Other is same as their chemoautoheterotrophs. Sorry, auto will not be there, organo will be there. Organoheterotrophs. So एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या है, फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ है एंड कीमो ऑर्गेनो. बिकॉज ऑर्गेनो किस लिए लग रहा है, देयर सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर सोर्स इज व्हाट, ऑर्गेनिक. और ऑटोट्रॉफ्स में क्या था, उनका सोर्स क्या है, इनऑर्गेनिक. ओके, ये लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे फॉर देयर फीडिंग पर्पस. नाउ फोटो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स, दे कैन डायरेक्टली बी कॉल्ड एज फोटो
heterotrophs, and here these can directly be called as chemoheterotrophs. Now, most of the bacteria, as I've told you, explained you earlier, most of the bacteria are what? Heterotrophic. Most bacteria use what? Heterotrophic method, and in that also chemotrophic is mostly used. Okay, so सबसे ज़्यादा means the most widely used method of nutrition is what? Chemoorganoheterotrophic method by the bacterians. Okay, now photoorganoheterotrophs, this will include the pigment. Pigment is present because photo itself means what? Light. So pigment will involve. Pigment is present, and what kind? That same two kind as I have explained earlier, which got confusion into that chemoautotrophs element. Okay, so it will be bacteriopurpurin again and bacterioviridin. Now we already know bacteriopurpurin is what? Purple color, and it is what? Green color. So purple color and green color, they both example will include them. Their example will include what? Purple non-sulfur bacteria, and this include many kind of bacteria also in this. Bacteria and green non-sulfur bacteria. Why I'm saying non-sulfur? Because they don't use sulfur. They don't make use of sulfur. Sulfur का यूज कहाँ होता है? Sulfur का यूज होता है, sulfur is used in autotrophic न्यूट्रिशन. जहाँ पे सल्फर यूज हो रहा है वो क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और उसमें क्या हो रहा है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट. बट हियर what we are using, we are not using the sulfur, we are using some other elements like H2SO4 or maybe some other element are used. So that is why here purple non-sulfur bacteria and green non-sulfur bacteria will be the examples of this photoheterotrophs or photoorganoheterotrophs. Okay, now these one chemoheterotrophs, they are mostly feed on what? Dead and decaying organism. Dead and decaying organism means जो already खराब हो चुके हैं, already environment में exist कर रहे हैं, they don't have to do anything for that, and they just feed and grow over there. Okay, and they obtain their nourishment from the dead only. So chemoheterotrophs में क्या है? Dead and decaying organism से लेंगे. They can also be parasitic. So parasitic में क्या है? Directly feeding on live organisms. Means there are many kinds of bacteria that are present in human beings also, living organisms also. So these kind of bacteria do what? They act as host, and जो भी एक organism अपने अंदर ATP और energy release करता है for their nutrition, that nutrition is what it is taking, or we can say it is it will take the parasitic it will take their nutrition to for their benefit. So parasitic bacteria does what? ये ऑलरेडी रेडीमेड न्यूट्रिशन जो रहता है उसको चोरी कर लेता है. जस्ट लाइक कि दे आर एक्टिंग लाइक अ थीफ हियर, एंड दे टेक व्हाट? ऑलरेडी रेडीमेड न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम देयर होस्ट. दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट. रेडीमेड न्यूट्रिशन को ये लोग क्या करते हैं? पैरासिटिक फॉर्म या पैरासिटिक बैक्टीरिया रेडीमेड न्यूट्रिशन को अपने अंदर ले लेते हैं. मींस कि जो ऑर्गेनिज्म अपना पूरा प्रोसेस करके न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है न्यूट्रिशन के लिए, उसमें से थोड़ा सा न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जो इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, दे आर टेकिंग दैट न्यूट्रिएंट ओनली फॉर देयर ग्रोथ. सो दीज आर पैरासिटिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया. Chemosynthetic also involve symbiotic bacteria. Symbiotic means, Sana, I have told you, can you explain me symbiotic? हम जो dead and decaying matter से अपना symbiotic relationship I have explained ना. Symbiotic relationship, do you know? You can also tell, Ayushi, if Yes. you know. Yeah, symbiotic relationship is what? One in which both the organisms are benefiting each other. Yes. तो ये क्या है? Both organisms will benefit each other. तो कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, और वेरियस टाइप के रूट से बनाएंगे, प्लांट से बनाएंगे, और ऑर्गेनिज्म से भी बना सकते हैं. सो मोस्टली क्या है? One most famous example of that bacteria, you have to remember the name, Rhizobium. Rhizobium is making what? Symbiotic association with higher plants. Symbiotic association with roots of higher plants. तो इसमें क्या होता है? Plants make their food, and for nutrition, Rhizobium is taking that nutrient. But Rhizobium in turn is what? Acting as what? Nitrogen fixation. It helps in nitrogen fixation and get its nutrient in turn, nutrition. Okay, so it is what? Mutual relationship going on. Therefore, it is acting as symbiotic relationship. One more example you can take, Frankia.
See, rhizobium only occur in what? Leguminous plants में. Leguminous plants means what, Sana and Ayushi? These are which Those kind who of, fix nitrogen in the roots. yeah, nitro and leguminous plants what means what? They have legumes in their structure, special legumes or pod like जो जितने भी plant होंगे, those plants which contain pods or special grains like structure वाले plants जितने भी होंगे, they contains legumes and those plant rhizobium occur as symbiotic relation. Okay, and Frankia occurs with what? It makes symbiotic relation with non-leguminous plants. Function सेम वही चीज करेगा. Frankia क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है and in turn it takes nutrients. Okay, function same है, but ये क्या है? Non-leguminous plants में है and rhizobium is what? In leguminous plants. So this nutrition is now completed. Nutrition topic is now completed. We can come here. See, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic includes what? Chemoautotrophic and photoautotrophic. Heterotrophic also include chemo and hetero. Okay, and in this chemo only parasitic, saprophytic and symbiotic are found. Okay, so chemoautotrophic means कि ये chemical synthesis का use कर रहे हैं. Chemical synthesis. Photoautotrophic means they will make use of light. Okay, and light में pigment present होगा and by with the help of that pigment they convert what? Inorganic form into organic form. Okay, and chemoautotrophy means oxidation of inorganic chemical compounds into ATP. Okay, oxidation करने के बाद energy will be released and that energy is used for ATP, and these two methods are just for what? Autotrophic method. Okay, now heterotrophic method includes what? Two kinds, heterotrophic, photoheterotrophic and chemoheterotrophic. Further, it is mostly used and chemoautotrophic में जो parasite, saprophyte and symbiotic है, इसमें भी ये वाले mostly use होते हैं. Means 70 to 80% type of bacteria are what? Chemoheterotrophs. Okay, now parasitic, we can see the definition. Saprophytes are what? They obtain food by decomposing dead and decaying matter. As I've already explained that saprophytes, they are mostly feeding on dead organisms and they are also act what? As a mechanism for cleaning the environment. Okay, so yeah, here it is benefiting the environment also and taking its nutrient also. Next, parasitic. Yeah, parasitic form में क्या है? These are disease causing bacteria mostly and for example lactobacillus bacilli also, salmonella typhi also, and some maybe other examples are also there. Those are acting as a parasite in human or in animals or in many other living organisms. Okay, and symbiotes what? They are mutually beneficial association. They are forming what? Beneficial association with some groups of other higher plants so that their nutrient necessity can be completed and also they can provide benefit to others. Okay, so symbiosis is what? Two-way process है symbiosis. एक तरफ से एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे तरफ से दूसरे का भी फायदा हो रहा है. Without this mutual benefit, symbiosis will not occur. So wherever you study or see symbiosis, you immediately get it to the point that mutual beneficiation or mutual benefit is going on in here. Okay, now any problem in nutrition topic? Sana and Ayushi. No, ma'am. Okay, Sana, what about you? Nutrition में कोई problem है? No, ma'am. Okay, now coming to respiration, how bacteria respire. Respiration in bacteria. On the basis of respiration, bacteria classified into what? Two kinds. Okay? Now this topic is respiration is kind of what? Very easy. We can either include that there are two types or we can say there are four kinds. This one is what? Four kinds. We can cross this one. In some book it is written four kinds and in some other it is written two kinds. So it is I have made it two kinds for understanding. So respiration is what? One is aerobic, another one is anaerobic. Let me explain here. Respiration. Respiration is of two kinds. Aerobic, second one is anaerobic. अब इन दोनों kinds में भी क्या है? We have two types. So overall क्या हो गया? चार type already हो गया. We can say this type or we can study four types directly. So इसमें क्या होगा? एक obligate, एक facultative. Same here, obligate and facultative. So अब obligate क्या है? Aerobic. Aerobic, facultative. See, एक यहाँ major point तुम्हें remember रखना है कि whenever you are writing about aerobic and if facultative comes, you have to write anaerobic. And here obligate anaerobic if you are writing. So facultative में just opposite of this one, aerobic. I'll explain each one of these now. See, obligate means what? They are strict kind. Obligate means what? They are strict.
स्ट्रिक्ट मीन्स ये बहुत जिद्दी होते हैं इन द सेंस कि अपनी जो बात है, लाइक इफ यू आर सेइंग दैट टुडे वी हैव टू ईट पिज्जा, सो मम्मी कितना भी अच्छा खाना बनाना, वी विल ईट पिज्जा ओनली। सो दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया लाइक दिस, ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। दे रिक्वायर ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तभी रेस्पिरेशन करेंगे, तभी ग्रो करेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला इनको तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट काइंड, और वी कैन से दे आर वेरी जिद्दी in terms of what, कि अगर इनको ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिल रहा है, if presence of oxygen is there then only they will survive, otherwise वो लोग क्या हो जाएंगे, dead, otherwise they will be dead. So they are strict one and they cannot change their rule. अगर ऑक्सीजन है तभी वो लोग रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो they will not use respiration. And same way the second one is what, facultative and aerobic. नाउ फैकल्टेटिव मीन्स ये लोग एडजस्टेबल हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एडजस्टेबल मीन्स नॉर्मली दे आर व्हाट, नॉर्मली दे रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैन लिव व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट। सो नॉर्मली इन लोगों का क्या है, एक फेवरेबल जो कंडीशन है इन लोगों का फेवरेबल कंडीशन है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव, दे कैन लिव। सो ये क्या है, फैकल्टेटिव वाले हैं। This is what facultative means, adjustable. They adjust themselves according to the environment. Okay. Now the third one is what? The third one, obligate. Again, face the obligate anaerobes. Means what? Is strict regarding what? Absence of oxygen. Here anaerobes means what? No oxygen should be there for their respiration. ये strict होते हैं इस मामले में कि अगर उनके पास ऑक्सीजन आया तो वो die कर जाएंगे, means they will be dead. Otherwise they prefer what, absence of oxygen to live. For their living, for their growth, they require absence of oxygen. And अगर ऑक्सीजन मिला, if they get oxygen's presence, they can die. They can die. Same here, the fourth one, facultative aerobes. See, name should not be confused. If we are talking about anaerobes, obligate anaerobes, then facultative में क्या हो जाएगा, just opposite of that anaerobe, aerobes will be there. It should not be get confused with other, adjustable. Again, they are what, adjustable to what, they normally require absence of O2 but can survive in presence of O2 also. सो नॉर्मली लोग की डिमांड क्या होती है कि नॉर्मली हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट अगर ऑक्सीजन इज देयर इन देयर एनी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस तो वो क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में भी दे कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज ऑल फोर काइंड ऑफ respiratory method which are used by bacteria. See, same here it is written, they are completely aerobic and die in the absence of oxygen. And facultative is what, aerobic तो है लेकिन क्या हो जाएंगे, वो लोग नहीं die करेंगे, they can maintain themselves like Clostridium tetani, Acetobacter aceti. They are what, facultative aerobic, means they require absence of they require presence of oxygen, but if oxygen is not present they can survive. Same as anaerobic में है, ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस एकदम भी नहीं रिक्वायर करते हैं, बट एरोबिक में क्या, ऑब्लिगेट में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एनारोबिक मींस ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। एंड फैकल्टेटिव में क्या है, जनरली ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दे कैन सर्वाइव fermentation bacteria except Acetobacter aceti, because it is what, here it is facultative aerobe. Okay, this point is clear. Respiration in bacteria, Ayushi and Sana. Yes, ma'am. Okay, so see, facultative anaerobic or facultative aerobic. You have to remember it like this. If we are talking about obligate one, see, obligate aerobe की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा facultative उसका उल्टा होगा, ठीक है। जब भी हम एरोब की बात करें, ठीक है, ऑब्लिगेट वाले का उल्टा हमेशा लिखा जाएगा। अगर हम ऑब्लिगेट वाले की बात कर रहे हैं एरोबिक में तो उसका उल्टा लिखा जाएगा, किसमें, फैकल्टेटिव एनारोबिक में। सॉरी, हियर आई हैव रिटन इनकरेक्टली, टाइपिंग मिस्टेक इज देयर, सो आई विल मेक इट करेक्ट आफ्टर दिस क्लास। सो ऑब्लिगेट एरोबिक में क्या बता रही थी कि जब भी तुम ऑब्लिगेट एरोबिक देखो या ऑब्लिगेट एनारोबिक देखो, उसके अपोजिट में तुम फैकल्टेटिव वाला हेडिंग लिखना। चार टाइप के याद कर लो, चार टाइप में क्या, ऑब्लिगेट एरोबिक, देन अगर एरोबिक का लिख रही हो तो फैकल्टेटिव एंड एरोबिक। एंड फैकल्टेटिव में क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन।
ऑब्लिगेट एरोबिक मीन्स जनरली उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू दिस कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. लेकिन फैकल्टेटिव एनाएरोबिक आ गया, देखो एरोबिक की जगह क्या आ गया, एनाएरोबिक, अपोजिट आ गया. सो अब इन्हें ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला मीन्स दे आर नॉर्मल, क्या है कि वो रिक्वायरमेंट, नॉर्मल रिक्वायरमेंट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला सो ऑल्सो दे कैन सर्वाइव. इसीलिए एनाएरोबिक लिखा जाता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, एंड उसके आगे फैकल्टेटिव लिखा गया, ठीक, कि वो लोग एडजस्ट कर सके अपने आप को एनवायरमेंट में. सेम वे ऑब्लिगेट एनाएरोबिक है, नॉर्मली क्या होता है, ये स्ट्रिक्ट रहते हैं रिगार्डिंग देयर नीड ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन फैकल्टेटिव में अपोजिट आ जाएगा. अगेन एनारोब्स हैं तो एरोब्स आ गया, ठीक. एरोब्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, इसलिए यहाँ एडजस्टमेंट के लिए फैकल्टेटिव का टर्म यूज हुआ है, ठीक. नॉर्मली दे रिक्वायर व्हाट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन आ गया सो ऑल्सो मीन्स देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव. आप समझ में आया सना, इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, तुमको बस इतना याद रखना है फैकल्टेटिव एडजस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए नहीं यूज हो रहा है. यूज्ड फॉर अनफेवरेबल कंडीशन और एडजस्टमेंट, ठीक. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोडक्शन. Bacteria reproduces by what? Both asexual and sexual method. See, complete sexual method नहीं देखा जाता, इसलिए here it is written parasexual method. ठीक. Now we will explain, we will study in detail reproduction point. Reproduction. Okay. So reproduction में सबसे मेन बात कि जब भी होगा बैक्टीरिया में दो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा. One is what? Asexual. Other is what? Sexual. But sexual cannot be called as sexual, it is parasexual. अब parasexual क्यों बोलते हैं? See, for any sexual क्या कहते हैं reproduction, four basic need क्या होती है? For any sexual reproduction, किसी भी sexual reproduction के लिए पहली बात meiosis होना जरूरी है. दूसरा, they should have what? crossing over or exchange of DNA. They also should have what? Sorry, I've written the third point over here only. Exchange of genetic material. और तुम लोग में से कोई और बताएं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? मियोसिस जरूरी है, क्रॉसिंग ओवर जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जरूरी है. व्हाट एल्स इज द रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्विकली 1 minute टाइम, कोई आइडिया नहीं है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द मेल और फीमेल होना चाहिए. मेल और फीमेल तो बैक्टीरिया में भी होता है, रिप्रोडक्शन में तो पढ़ लोगी. मेन क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. विदाउट फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट. फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी शुड बी देयर. सिंगैमी, ओके. सो ये चार प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट in this bacterial reproduction, meiosis is not occurring, crossing over is not there, fertilization is not there. Only what we see, exchange of genetic material, and that too on the basis of this property only we are saying कि bacteria में sexual reproduction देखा जाता है. That is why only they are called as parasexual, not sexual, because इसमें meiosis भी नहीं होता, crossing over भी नहीं होता, fertilization भी नहीं होता. Only we see exchange of genetic material. Understood this point? Why they are called parasexual? Yes, sir. Okay. Now, next point is what? Bacteria mostly we can say 80 to 85% bacteria mostly use asexual method of reproduction. Okay, asexual method of reproduction, and in that asexual method also they use what? Binary fission most used. Okay, in asexual method also most common method is what? Binary fission is what? इसमें कोई डायरेक्ट सेल डिवीजन नहीं होता. नो इनडायरेक्ट सेल डिवीजन. इनडायरेक्ट सेल डिवीजन इज व्हाट? नो इनडायरेक्ट सेल डिवीजन मींस व्हाट? मियोसिस या माइटोसिस का होना. बट यहाँ ना मियोसिस होगा ना माइटोसिस होगा, कोई भी प्रोसेस यहाँ नहीं होगा. सो नो इनडायरेक्ट डिवीजन इज देयर. ओनली डायरेक्ट डिवीजन इज सीन. सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिवीजन के थ्रू ही ये लोग डिवीजन करते हैं. And direct division is what? It is like a piece of paper. When you take piece of paper and tear apart from both the ends, and this paper divided into two parts, the process of division or asexual or binary fission is this kind of only. No spindle formation takes place. Spindle formation का formation क्यों नहीं होता सना? Ayushi, you also. Why does this doesn't take place? Spindle formation क्यों नहीं होता? No chromosome. Ma'am, what is spindle formation? Okay.
let me write it down, then I'll explain. Chromosome condensation. Okay, so a spindle fiber is like this. If we are taking an example of plant cell, if we are taking an example of plant cell, so for division जो फाइबर लाइंस बनते हैं ना, इस लाइंस को क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं. और ये फाइबर अराइज कहाँ से होता है? यहाँ ये सेंट्रियोल और दिस सेंटर एरिया से. जब तुम सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स का प्रोसेस है. सो जब सेल डिवीजन या मियोसिस या माइटोसिस होता ही नहीं तो स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनेगा? दैट इज व्हाई वी आर रिटन नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर्स. दिस लाइन व्हिच इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर. ओके Okay, ma'am. क्योंकि जब कोई सेल ऑर्गेनेल ही नहीं प्रेजेंट है, तो जब कोई सेल ऑर्गेनेल्स लाइक व्हाट, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, ओनली न्यूक्लियोइड मींस दैट bunch of irregular chromosomes or DNA segments are present. Irregular DNA segments are present. So ये जो DNA segments है इन्हीं को तुम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. और जब सिर्फ न्यूक्लियोइड ही प्रेजेंट है, सो ओनली प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई की वजह से, न्यूक्लियोइड की वजह से इसमें ना क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है ना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये सब कोई प्रोसेस डीएनए में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऑर्गेनिक ही नहीं है इस प्रोसेस को प्रोसेस कराने के लिए, इसलिए ये सब नहीं होता है. सिंपली क्या करते हैं? इट इज लाइक वन बैक्टीरिया. सी इट इज वन बैक्टीरिया एंड इट इज गोइंग इनटू डिवीजन. कुछ देर के लिए क्या करेगा? अपने आप को और इलांगेट कर लेगा लाइक दिस, एंड देन इट विल डिवाइड इनटू टू स्मॉलर बैक्टीरिया. ओके, बस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट? लाइक दिस ओनली. एक यहाँ पे इसका ये हो गया न्यूक्लियोइड एंड एक ये प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज व्हाट? समवॉट काइंड डीएनए मटेरियल. प्लाज्मिड. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इन सम प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, इन सम प्लाज्मिड इज नॉट प्रेजेंट. अभी आगे रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक आएगा उसमें तुम पढ़ोगे. ये है जीनोफोर और न्यूक्लियोइड. व्हाट हैपेंस कि ये जो जीनोफोर है ये सेंटर में आके इलोंगेट होना शुरू कर देता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओनली इलोंगेशन ऑफ दिस जीनोफोर अकर्स, एंड जब इलोंगेशन हुआ दोनों एक दूसरे को खींचे और फिर क्या हुआ? हाफ ऑफ दिस जीनोफोर इज डिवाइडेड इनटू दिस वन, हाफ ऑफ दिस जीनोफोर इज in this one. Now two daughter cells are formed. So this one is very easy division method. That is why most of the bacteria opt for asexual and binary fission. Binary fission is somewhat like कि कोई भी बैक्टीरिया है, दोनों में क्या हुआ? थोड़ा सा इलांगेशन हुआ एंड देन फिर दे आर रिपेल ईच अदर, और थोड़ा सा क्या हुआ? जीनोफोर में खिंचाव हुआ, फिर ओनली ऑन बेसिस ऑफ दैट इलांगेशन पॉइंट वो क्या हो जाता है? बीच से टूट जाता है, एंड टूटने के बाद क्या हो जाता है? टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. सो दिस इज व्हाट एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वी कैन से बाइनरी प्रोसेस. बाइनरी फिजन का प्रोसेस इज लाइक दिस वन. ओके, नाउ वन मोस्ट important point, it is not a method of reproduction, but here it is written endospore formation. See, next one is what? Binary fission. Second is what? Endospore formation. Now what a bacteria does in unfavorable condition. See, during okay, yes, Sana and Ayushi 7:30 मेरे को रिमाइंड करा देना, ठीक है? Endospore formation is what? It occurs only during unfavorable condition. जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी बैक्टीरिया के पास या बैक्टीरिया के सराउंडिंग में, तब ही इंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा. अदरवाइज दे विल कंटिन्यू टू रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल और बाइनरी फिशन मेथड. ओके, नाउ इन अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया डज व्हाट? इट डज नॉट डिवाइड. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? इट डज नॉट डिवाइड एट ऑल. इट डज नॉट डिवाइड. ओके, इट डेवलप्स लेयर्स अराउंड इटसेल्फ. ओके, और ये अंदर बैक्टीरिया है एंड लेयर, दिस इज कॉर्टेक्स लेयर, अ हार्ड कवरिंग. It develops very hard covering around itself. So endospore formation is what? जब भी unfavorable condition आता है, bacteria does not divide at all. It just develops some kind of layers around itself, and which that layer is what? Very hard and resisting, highly resistant, highly protective. This layer is what? Highly resistant also, highly protective also. Protective and not easily breakable. ये आसानी से टूटने वाला नहीं है. सो कब बनाते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है. और ये इस स्ट्रक्चर को व्हाट वी कॉल? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर. व्हाट? पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर. और सिंपली वी कैन ऑल्सो से, यस आयुषी? Ma'am, I will. I'll have to leave a little early because I'll have to teach for the offline math class as well. I mean, Okay. So you are going to leave the class?
Okay, next Yes, time ma'am. you will join, I'll just take a quick revision of this. Okay. Yes, ma'am. And moreover, I have to Hmm. talk with ma'am and see about the biology subject. I'm pretty unsure, I'm not sure about what I have to take biology or not. So that's why. Okay. Okay. So till then you can think it of whether you want to take or not. Okay. Okay, ma'am. Yes. Then I'll leave, ma'am. Okay. Thank Bye. you. Bye. Yeah. So now where were we? The structure. ये जो structure है इसको बोल रहे हैं हम लोग what? Perinating structure. And the process. Process क्या हो जाएगा? Perination. Perination. The process will be what? Perination process. Now we can see in the diagram also the formation of endospore occurs only when. See, this is inside. It is what? This is bacteria. लेकिन बैक्टीरिया अपने अराउंड क्या कर रहा है? It has developed several layers around itself like spore wall, then cortex layer, keratin spore, core and spore. See, inside this core only bacteria is present, but unfavorable condition में they have developed one wall, two wall, and three wall. Three different kind of wall around itself so that it can sustain. It can sustain unfavorable condition. Unfavorable condition में भी अपने आप को sustain कर सके. This is the main criteria of endospore formation. It is highly resistant, resistant to temperature, radiation, antibiotics also. Any kind of antibiotics or high temperature does not work on in endospore formation, or we can say perination. Perinating इस perinating structure पे किसी भी तरह का हाई टेम्परेचर लो, चाहे रेडिएशन लो, चाहे एंटीबायोटिक यूज करो, इस पे उसका असर नहीं होगा. द बैक्टीरिया विल रिमेन एज सच. It is not a true form of reproduction. See, why we are saying again and again that it is not a true form of reproduction. यूजुअली क्या होता है रिप्रोडक्शन में? यूजुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक से क्या होता है? एक बैक्टीरिया से अगर रिप्रोडक्शन कराएं तो दो बनने चाहिए बैक्टीरिया, ठीक है. बट हियर व्हाट इज अकरिंग? बट हियर बैक्टीरिया क्या कर रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में इंडोस्पोर बना रहा है. एंड जब ये अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जा रही है, अगेन इट इज गोइंग बैक टू इट्स व्हाट? नॉर्मल पोजीशन. बैक्टीरिया मींस इंडोस्पोर रिटर्निंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. सो यहाँ एक बैक्टीरिया था, यहाँ पे एक ही बैक्टीरिया ही तो है. किसी ने मतलब कोई इंक्रीमेंट हुआ है? देयर इज नो इंक्रीमेंट हियर फ्रॉम हियर. नो इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन नंबर. नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड व्हाट? नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि एक ही बैक्टीरिया स्टार्टिंग में भी था, फिर अनफेवरेबल कंडीशन में इंडोस्पोर बना लिया, और फिर जब ये फेवरेबल कंडीशन वापस आई तो वो बैक्टीरिया वैसा का वैसा ही इंडोस्पोर के बाहर आया है, ना कि नया बैक्टीरिया बना है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट? दैट इज व्हाई नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, अंडरस्टूड सना? Yes, sir. Yeah, some also say reproduction without division. Okay, बिना डिवीजन के रिप्रोडक्शन. बट ये ट्रू रिप्रोडक्शन है ही नहीं, तो ये सेंटेंस अभी भी डिबेट में चलता है कि रिप्रोडक्शन विदाउट डिवीजन इसको माना जाए या नहीं, बिकॉज रिप्रोडक्शन तो उसमें हो ही नहीं रहा है. रिप्रोडक्शन इज व्हाट? क्रिएटिंग टू फ्रॉम वन. लेकिन यहाँ पे एक से एक ही बन रहा है, इसलिए इसको बोला गया है नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड some may also say reproduction without division. Okay, up to this point it's clear what is sexual reproduction and what are its kinds. Let us see the note also. Binary fission, I've told you, it is in which bacterial cell divides into two parts. Most common method है, ये याद रखना, most common method of reproduction है asexual में binary fission. Binary fission क्या है? Mostly 80 to 85% of bacteria use this process only for their division. Okay, during favorable conditions, DNA replication takes place in bacterial cell. This bacterial cell divides into two daughter cells due to the formation of transverse septum in center of the cell. See, in this figure, it is what? Nucleoid is there. This elongation in nuclei occurs, and elongation के बाद क्या हो रहा है? Splitting. They are what? Splitting up. यहाँ क्या हो रहा है? Elongation and splitting up. Split up को क्या बना रहे हैं? Cross बना रहे हैं, cross wall. And now क्रॉस वॉल को क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिटोरिएट हो जा रहा है. डिटेरियोरेशन ऑफ क्रॉस वॉल. जब क्रॉस वॉल कंप्लीटली डिटेरियोरेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? टू डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स आर फॉर्म. ये बाइनरी फिजन का मेन मेथड है. आई होप यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टैंड. नाउ इंडोस्पोर फॉर्मेशन इज अ पॉइंट. We cannot say it's a type of asexual. Many can say that it is a type, but it is a point whether it is in the asexual method only कि जब unfavorable condition आता है तो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. It is highly resistant structure.
resistant to what? Temperature, radiation, antibiotics, chemicals, etc. And it is mostly seen in bacillus type bacteria. It is not a true form of reproduction. Various layers क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं unfavorable conditions में, and जब वो unfavorable condition हट जाते हैं तो ये layer क्या हो जाते हैं, dissolve. These layer gets what? These layers gets dissolve. और वो जो बैक्टीरिया छुप के बैठा था वो वापस वही बैक्टीरिया निकल के आता है. That is why they are not called as true reproduction form. Okay, now we will study sexual reproduction in other class, and this one is of three kind, just for info: conjugation, transformation, and transduction. Okay, up to here you have studied and understood everything? Yes, ma'am. Okay, if you are having any problem you can ask for like 5 minutes extra we can take for problems.